Tushar, how do we address this? Why are people not even talking about it? Forget anything else. This is about vote bank. This is about the majority of the population. The voting population still doesn't want to do away with reservations. It's an unfortunate reality. And that is why I always say, you want to get rid of reservations, do it. But it will have to be a bipartisan call. If you're hoping that one party will take a stand against reservations and it will work, it will never work. You're living in a la-la land. But to start with addressing reservations and excess of reservations, the first thing we need to do across states, BJP or non-BJP, and even in the center, though the UPA tried, get the Muslims or the Christians or any religious groups out of the OBC list. That is the first step towards addressing reservation. There should be no backdoor for religion-based reservations through OBC list. Because OBC classification happens on social and educational backwardness, a lot of state governments, including the BJP, have made it a backdoor for religion-based reservations since many years now, perhaps a couple of decades. So this is the first steps toward eliminating reservations. Okay. Number two, within the OBC groups, also you look at the dominant OBC groups, say in UP and Bihar, and you start addressing what quota of reservation they really need to have. No, but Tushar, let's address the fundamental point that you began by, which is that it has to be a bipartisan call. So when you say this, you admit that no party wants to risk the wrath of voters. Harshvardhan ji, isko hum samay, yeah, Tushar, Vivek Srivastava and Harshvardhan ji haven't spoken. I don't have much time. Even on the bipartisan spectrum, Congress wants private sector reservation and religion-based reservation. Compare it to what the BJP wants. So we also have to. No, I'm not getting into BJP, Congress. They're all equally at fault. Harshvardhan ji. प्रणेश भाई, ये बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी की डिबेट है ही नहीं। और अगर रिजर्वेशन इस तरह से जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, मेरिट को किल किया जा रहा है, तो मोदी जी का विकसित भारत का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं और मैं पहले भी कहता रहा हूं, हालांकि मैं इसका पक्षधर कतई नहीं हूं कि रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति का बड़ा समाज है जिसको हैंड होल्डिंग की अभी भी जरूरत है, लेकिन वो कितना होगा रिजर्वेशन, मेरिट कितनी होगी और क्या ओबीसी को रिजर्वेशन की जरूरत है? और अगर जब हमने तय किया था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा, वो कोई जाति तो थी नहीं। अनुसूचित जाति का मतलब जिसको भी आप चाहें अनुसूचित में डाल दें, तो क्यों नहीं, जिसको जरूरत आपको लगती है उसको वही तो हो रहा ना हर्षवर्धन जी। आपने कह तो दिया विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन जिनका सपना है और जो विपक्ष में है, वो जैसे तुषार ने कह दिया, उस एक स्टेटमेंट इतनी पावरफुल है कि ये बाईपार्टिजन कॉल होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि दूसरे को वोट का फायदा नुकसान हो जाए।